Jai Hind. Today we are going to study an important capability of bryophytic plants as bioindicators. Bryophytes, an ideal organism for pollution studies, means they are good indicator of pollution. Why? The habitat diversity, because they are present in diverse habitats, as we have already studied about the habitat of bryophytic plants. Structural simplicity, means they are simply parenchymatous, very simple structure inside and outside. Totipotency ability means they can regenerate, or they regenerate very quickly from the cut part even, and from even the apical portion of the thalli. Rapid rate of multiplication, during the favorable seasons they multiply rapidly, and high metal accumulation capacity make the bryophytes an ideal organism for pollution studies. Please mute yourself. Decline and absence of bryophytic population, especially epiphytes, is a phenomenon primarily induced by air pollution caused by gaseous and particulate pollutants. ब्रायोफिटिक पॉपुलेशन जो स्पेशली एपिफिटिक होती हैं, यानी जो ट्रीज के ट्रंक्स पे, लीव्स पे ग्रो करती हैं, ये यूजुअली अगर एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो इनकी ग्रोथ डिक्लाइन हो जाती है और कभी कभी ये समाप्त भी हो जाते हैं. दे यूजुअली नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरियाज. सो ये भी इनकी एबिलिटी इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह से कैपेबल बनाती है. यानी हम इनकी स्टडीज करके ये बता सकते हैं इस एरिया की पॉल्यूशन कंडीशंस को. Then bryophytes in response to pollution, how they respond to the pollution. There are two categories of bryophytes in response to pollution studies. Number one, which are very sensitive to pollution and show visible symptoms of injury, even in the presence of minute quantities of pollutants. This serves as a good indicator of the degree of pollution and also of the nature of pollutant. तो ये इनमें स्पेसिफिक, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और विजिबल सिम्टम्स दिखाई देते हैं. जैसे सिंपल सिम्टम दिखाई देता है कि क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स का डिग्रेडेशन होना, या येलोइंग ऑफ द थैलस का होना, या ड्राइंग ऑफ ब्राउनिंग ऑफ द थैलस का होना. ये शो करता है कि ये इंडिकेट करते हैं पॉल्यूशन की प्रति, ये रिस्पॉन्स शो करते हैं. Second है which have the capacity to absorb and retain pollutants in quantities much higher than those absorbed by other plant groups among the plant kingdom growing in the same habitat. These plants trap and prevent recycling of such pollutants in the ecosystem for different period of times. Analysis of such plants gives a fair idea about the degree of metal pollution. और इतना ही नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन इनका इतना क्विक होता है क्योंकि हम जानते हैं कि इनके थैलाई की सरफेस से भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दे हैव द कैपेबिलिटी, और दे हैव सम कैपिलरी एक्शन बाय विच दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर. अब पॉल्यूटेंट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया आपको दे देती हूँ कि किन के प्रति ये सेंसिटिव हैं और ये शो करते हैं अपना रेस्पॉन्स. पॉल्यूटेंट्स जो गैसियस फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोराइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड्स, लेड एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट फ्यूम्स, इनके लिए ये सेंसिटिव हैं, तो ये पॉल्यूटेंट्स के लिए रिएक्ट करते हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैव आल्सो ग्रेटली इंक्रीज इन द सिटीज विद द राइज ऑफ द ऑटोमोबाइल. सो इसकी वजह से जो मेन एरियाज हैं, सिटी एरियाज हैं, वहां पर ब्रायोफिटिक प्लांट्स धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जा रहे हैं. पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स, कोल, सूट एंड फ्लाई ऐश, जहाँ पर ये ईंटों के भट्टे होते हैं वहां से निकलती है, सीमेंट फैक्ट्रीज से लिक्विड पार्टिकल्स, heavy metals and radioactive materials. Then ozone is a secondary pollutant, as you know, formed by the action of sunlight on nitrogen oxide, nitrogen dioxide and on certain hydrocarbons. So ozone release होती है.
Air pollutant either in gaseous state mixed with air or in liquid state affected by dew, rain or snow will be noxious to bryophytic attached to the bark of the trees. Then effect of pollinants on bryophytic plants. This picture shows, I've taken these pictures from all pictures in my lecture from Google. So you can see here, these are higher bryophytic plants and these are very low group of plants, means maybe Hepaticopsida or Anthocidotopsida member. They are declining in their growth and showing yellowing. Bryophytes have been disappearing from urban industrial environment because of their sensitivity to polluted air. Air pollution inhibits gametangial formation and sexual reproduction in bryophytic plants. Pollutants का सीधा असर reproductive phases पे होता है, यानी male and female gametes का formation either checked or they may not get proper rain for their functioning. Then effect of pollutants, they also reduce photosynthesis by degrading chlorophyll and growth of the plants and eventually causes their death. When the metal enters the cell, it inhibits the photosynthetic activity directly. Enzymes and membranes are poisoned when a heavy metal gain access to cell interiors. तो ये bryophytic plants है क्योंकि they are very very simple in structure. Leaves are flat, single cell thick. So they are quickly affected by the pollutants present in the nearby atmosphere of the bryophytic plants. Then it is evidence that when pollution level goes down, the percentage frequency of species goes up, means their growth is proper when pollution is less in the area, which subsequently increases the fertility percentage. और जितना fertility percentage increase होगा उतनी ही growth अच्छी होगी, उतना ही flourish करेंगे bryophytic plants. Bryophytes die within a short period of time depending on the level of pollution when transferring along with their substrates from unpolluted to polluted areas in the city or around the factory. The common symptoms of injury are plasmolysis and chlorophyll degradation in the leaf cells. ये सबसे quick जो response दिखाते हैं वो यही है कि yellowing होने लगता है इनमें, yellow brown होने लगते हैं, chlorophyll degradation होता है और cells plasmolyze हो जाती हैं, means water content oozes out from the parenchymatous cells. Sulfur dioxide exposed plants show brownish spots on the chloroplast and plasmolysis in the cells of leaves, which contributed to the ultimate death of the plants. Because अगर plasmolysis हो जाएगा और chlorophyll degradation हो जाएगा, they may not photosynthesize and they die very soon. Then ozone uptake by the plant species, ये वहीं का एरिया का लिया गया है, अंटार्कटिका आर्कटिका जोन का, जहां पर ओजोन की मात्रा ज्यादा होती है. Ozone uptake by the plant species often results in the acute injury, premature aging and senescence. Bryophytes show impairment of the photosynthesis or increased membrane leakage when subjected to an acute ozone exposure, और ये है 100 ppb means parts per billion. तो इसमें acute leakage हो जाती है, means completely plasmolysis takes place. Several species of sphagnum were found to be chronic to ozone exposure. स्फेग्नम वैसे यूजुअली काफी टफ मॉस है, लेकिन चूंकि बॉग एरिया में भी ये इजीली ग्रो करता है, लेकिन ओजोन के लिए ये क्रोनिकली इसकी डेथ हो जाती है, मींस सेल्स प्लाज्मोलाइज कर जाती हैं. ब्रायोफाइट्स आर एबल टू कंसंट्रेट हैवी मेटल्स इन लार्ज अमाउंट्स देन दैट ऑफ द अदर वैस्कुलर प्लांट्स और हायर प्लांट्स. The older tissue of the plant have higher concentration of metallic ions as compared to the younger portion. तो जो ओल्डर पोर्शन होता है क्योंकि वो सरफेस से ज्यादा नजदीक होता है और वो ज्यादा कैपेबल होता है या पहले से ही एब्सॉर्ब करके वो कंटेन कर लेता है हैवी मेटल्स को. तो कंसंट्रेशन अगर हैवी मेटल्स की इनकी प्लांट बॉडीज में स्टडी की जाए तो इससे हम बता सकते हैं कि उस एरिया में किस टाइप का पॉल्यूशन है, हैवी मेटल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ऑटोमोबाइल्स के थ्रू है, ये सब हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं.
the ability of mosses to accumulate heavy metals depends upon the total leaf surface and the number of thin-walled parenchyma cells because they are very simple in structure. तो जो thalloid forms होती हैं उनमें surface area ज़्यादा होता है और they are directly exposed, मतलब upper area open ventral surface totally exposed होती है तो वो ज़्यादा accumulate कर सकती हैं और वो earth surface से near भी होती हैं, नीचे भी होती हैं. इसी तरह से अगर हम हायर ब्रायोफिटिक प्लांट्स की बात करें लाइक एट्रिकम अंजुलेटम इज हाईली सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन. दिस इज अ मॉस एंड प्रूव्स बेस्ट एज ए बायो इंडिकेटर. ये तुरंत शो करता है कि ये यहाँ पर इस जगह पर एयर पॉल्यूशन है तो ये इसको यूज भी किया जाता है एज ए मॉडल प्लांट एट्रिकम अंजुलेटम. Then Ceratodon purpureus is not a good indicator because its leaves have a small surface. बहुत छोटी छोटी पतली पतली narrow leaves होती हैं and contain many thick walled cells. इसमें कुछ कुछ parenchyma cells जो outer area में होती हैं epidermal region में वो थोड़ी thickened हो जाती हैं तो ये pollutants को quickly absorb नहीं करता. So it is not a good indicator. ये आराम से उस area में easily grow करता है flourish करता है जहाँ even pollution भी हो. Then why bryophytic plants used as bioindicators? Because they are inexpensive and effective monitoring system. They have effective monitoring system. Carpet forming bryophytes have proved to be rapid and inexpensive method for surveying heavy metal deposition in the terrestrial ecosystem. अगर हम study करना चाहें चूंकि ये bryophytic plants even thallophytes means algal plants, they cover the surface, they also used as a bioindicator, but because they require water content more because algae are aquatic. लेकिन अगर हम bryophytic plants की बात करें तो they are having a small leaf-like structure or thalloid forms. They cover the area or the ecosystem, terrestrial ecosystem quickly because they multiply quickly in the favorable conditions. तो हम इनको heavy metal deposition के लिए easily use कर सकते हैं monitoring के लिए. Accumulation of mercury is found greater in Dicranum scoparium. This is also a moss. यहाँ शो किया है. This is Dicranum. ये इजीली मर्करी को एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रेटर अमाउंट में. तो जहां मर्करी का पॉल्यूशन है या ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पर मर्करी का यूज होता है तो इस हैवी मेटल ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है एज ए गुड इंडिकेटर कि यहाँ पर मर्करी के सोर्सेज ज्यादा हैं. द गेमेटोफाइट्स ऑफ मॉस कैन एक्युमुलेट आयरन 5 to 10 times more readily than the vascular plants. तो मॉसेस के इवन गेमेटोफाइट जो हैं मींस थैलॉइड फॉर्म्स और लीफी फॉर्म्स दे एब्जॉर्ब मोर or accumulate more than other vascular plants. The concentration of aluminium, barium, chromium, copper, iron, gallium, nickel, lead, silver, tin, vanadium, then zinc and Zr were higher in bryophytic than those of other angiospermic plants. Bryophytes are able to concentrate rare earth metals too. Elements which are rarely found in other plants were also found in the bryophytic plants. So they have the capability to absorb and retain those. Then bismuth were found in the thallose liverwort like Conocephalum conicum. These are the studies of different scientists or biologists. This is Conocephalum conicum. It shows more bismuth and Markensia also. Markensia, you know about the thalloid form. Then strontium in the saxicolous mosses, Grimmia levigata and Hadwigia ciliata, and silver in Atricum augustatum and Polytrichum commune. This is this moss is Grimmia levigata. Then copper, lead, and boron are found in the substrate of Malicofaria. This is a moss, Malicofaria. Then accumulation of mercury is found greater in Dicranum scoparium. Dicranum मैंने आपको दिखाया पहले, और then Polytrichum commune, which is due to differences in their life forms. तो Dicranum में ज़्यादा है capability store करने की as compared to Polytrichum. Polytrichum आपके कोर्स में भी है. This is Polytrichum commune. It less store the mercury. Some bryophytic plants are metal tolerant and are capable to withstand level of heavy metals and are toxic to other species.
तो इसमें कौन कौन से हैं? जीनस मार्केशिया पॉलीमॉर्फा, then Solenostoma granulata, then Ceratodon purpureus, and Funaria hygrometrica. These are some of the metal tolerant populations of the bryophytic plants. They are tolerant, they can store, but they can withstand, means they flourish well with the heavy metals even. Bryophytes growing on stone walls can tolerate higher level of pollution than those of the tree trunks. जो tree trunks पे grow करते हैं, they are more sensitive as compared to the bryophytic plants growing on the stone walls. Bryophytes are bioindicator of air, water, and accumulator of heavy metals. Communities of mosses, lichens, and liverworts reduced in size over a period of time in such disturbed environmental conditions, means having the air pollution. Mosses disappear from such polluted areas except a few tolerant species. और वो tolerant species क्या है? Bryum, Ceratodon, Dicranovicia, Funaria, Hyophila, and Tortula. Then Pileaceella and Orthotrichum are shown to change the color of leaves due to chloroplastic pigments degradation when they are exposed to हाइड्रोजन फ्लोराइड पॉल्यूटेड एरियाज. अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड ज्यादा है तो इनमें क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट डिग्रेडेशन शो होता है. Bryophytes are very sensitive to hydrogen fluoride. Even a low concentration like 0.001 to 0.1 ppm, ppm means parts per million, इतने sensitive होते हैं इतनी कम concentration of hydrogen fluoride के लिए, and they show symptoms of injury, plasmolysis and degradation of chloroplastic pigments ये show करते हैं. Even a low concentration of sulfur dioxide inhibits the flourishing of mosses, as protonema are especially sensitive to this sulfur dioxide. ये ऑर्थोट्राइकम लेली है जो शो करता है कलर चेंजेस. मैंने अभी बताया आपको ऑर्थोट्राइकम. दिस इज ग्रीन व्हेन देयर इज नो पॉल्यूशन, बट इट शोज yellowing means due to the chloroplastic degradation, and gradually plasmolysis takes place, and subsequently the population of orthotrichum reduces. Then sphagnum have a peculiar character to bind radioactive compounds through cation exchange and also used for purifying contamination of the wastewater. तो स्फैग्नम कभी कभी बहुत सपोर्टिव होता है क्योंकि रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को बाइंड कर लेता है, लेकिन फिर भी ये साइकिल में तो आएगा ही. तो अगर हम वहां ग्रो कराएं ऐसे एरियाज में जहां रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स रिलीज किए जाते हैं, तो यहाँ पर ग्रो कराने से उस एरिया में ये रिड्यूस कर देगा, लेकिन फिर वहां से इसको क्विकली रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमने जब प्योरीफाई कर लिया उस एरिया को तो फिर वेस्ट वाटर को, तो वहां से इसको रिमूव करना पड़ेगा और फिर न्यू उसमें स्फैग्नम प्लांट्स को डालना पड़ेगा. नहीं तो ये क्या करेगा, फिर वो साइकिल में डिग्रेडेशन के बाद ले आएगा. क्योंकि स्फैग्नम में एक और कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ये बॉगी एरिया फॉर्म करता है, नीचे वाला पोर्शन इसका डेड होता चला जाता है और ऊपर वाला पोर्शन न्यू ग्रोइंग होता है. तो नीचे जो है ये धीरे धीरे एसिडिक सॉइल फॉर्म करने लगता है, तो फिर ये साइकिल में आ जाएगा. तो वेस्ट वाटर में प्योरीफाइंग करने के साथ साथ ये कंटामिनेशन को रिसाइकिल भी कर सकता है. तो इसके लिए पर्टिकुलर मेथड्स यूज किए जाते हैं. सम स्पीशीज ऑफ एनोमोडॉन, डाइक्रेनम, यूरेंकियम, ल्यूकोडॉन, मिनियम, रिंकोस्टेजियम एंड थ्वेडियम आर एबल टू एक्युमुलेट सीजियम. मतलब ये रेयर मेटल को भी एक्युमुलेट कर सकती हैं. तो ये एज ए बायो इंडिकेटर वो एरिया में प्रेजेंट है, शो करते हैं, और इनकी ग्रोथ पे जो इफेक्ट होता है इसको स्टडी किया जा सकता है. Species of Brachythecium, Buxbaumia, and Grimmia are able to concentrate much strontium than that found in their substrata. बहुत ज्यादा इसको accumulate कर सकते हैं, तो ये removal का भी काम करते हैं वहां से. Some terrestrial bryophyte accumulate uranium even. High level of pollutants like fluoride, sulfur dioxide, acidified rain, and heavy metals are responsible to inhibit sporophytic growth of many bryophytic plants or species. Aquatic bryophytes are the best monitoring agent for heavy metals, as they are able to concentrate
these heavy metals and can release these metals only after decomposition. तो अगर हम aquatic bryophytes में अगर वो वहाँ cleaning करना चाहते हैं जहाँ heavy metals release किए जाते हैं, तो हम इनको एक specific plan के through grow कराते हैं और उसके बाद वहाँ से remove कर देते हैं. और ऐसे एरियाज में जहाँ पे ये रिसाइकिल कम से कम हो, ग्रेजिंग एनिमल्स इनको खाएंगे नहीं, क्योंकि यूजुअली ब्रायोफिटिक प्लांट्स आर नॉट एडिबल. कुछ ही प्लांट्स एडिबल हैं जिनके पार्ट्स और जिनके कैप्सूल्स यूज किए जाते हैं. Then high concentration of cadmium in some bryophytes show a distinct change in the pigmentation. अगर कैडमियम एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके पिगमेंटेशन में कलरेशन हो जाता है, मींस डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट का, लेकिन कैडमियम की हेल्प से जैसे कलरेशन में ग्रीन टू वॉयलेट और ब्लू कलर में चेंज कर सकते हैं ये. इन मार्केशिया एंड फ्यूनेरिया द जिंक कंसंट्रेशन रिड्यूस द स्पोर जर्मिनेशन दैट इज मोर देन 50 ppm. अगर 50 ppm से ज्यादा रहेगा जिंक तो स्पोर जर्मिनेशन रिड्यूस हो जाता है, हाईली मोर देन 80% रिडक्शन शो करता है. स्पीशीज ऑफ ब्रायम, डाइक्रोनेला एंड पॉलीट्राइकम आर एबल टू टॉलरेट हाई लेवल ऑफ जिंक. 55,000 ppm तक ये टॉलरेट कर लेते हैं. कैडमियम 610 ppm तक टॉलरेट कर सकते हैं एंड कॉपर 2700 ppm 2700 ppm तक अपने टिश्यू में एक्युमुलेट कर सकते हैं. और इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा चेक नहीं होती है, तो दे आर टॉलरेंट टू दिस मच ऑफ ppm, जिंक, कैडमियम एंड कॉपर. Then they are also a good indicator of water pollution, as told you. Then life forms of bryophytes is very simple, so they are comparatively more affected by polluted waters. Then polluted water also affect the benthic and marginal soil, thus it directly affects the aquatic bryoflora and directly and indirectly affects those bryophytes which grow on the water banks. Then pollutants change the quality of water, which is determined on the basis of several physicochemical and biological parameters. Because of their simple plant body, means bryophytic plant body, they appear to be sensitive to polluted waters due to following reasons. तो ये मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ कि इनकी जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वेरी स्मॉल, सॉफ्ट, डेलिकेट होती है. देन दूसरा इसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं सरफेस से. So these are some aquatic bryophytes which are pollution tolerant species. Out of these 4 important species I have listed over there. Then Ambylostegium varium, then Euryncium rhaperoides, then Functionalis antipyretica and Functionalis squamosa. These are very good example of pollution tolerant. These are aquatic bryophytic plants. I have shown 3 here: Ambylostegium, Functionalis antipyretica and Euryncium. So these are all mosses, है ना, which are tolerant and these grow. देखिए पानी के जो किनारे हैं, banks, उन पे grow करते हैं और they need good water. Purely aquatic नहीं है, but they grow very near to the water bodies. Then bryophytes, aquatic bryophytes which appear on the banks of river Ganga and are affected by river water quality. ये sensitive हैं, मतलब ये गंगा के आसपास यानी fresh water bodies के आसपास grow करते हैं. Rixia gangetica, Rixia frosti, Funaria hygrometrica and Psychometrium indicum. है ना, these are pollution tolerant species. Tuberculate rhizoids are marginal and scales are more developed in highly polluted sites. तो ये थोड़े से tolerant होते हैं, monoecious species है और इनके स्केल्स जो है इनको प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह से वर्क करते हैं, तो वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं और जो इनके सॉफ्ट एरियाज उनको प्रिवेंट करते हैं. रिक्शा फ्रॉस्टाई, अ पोल्यूशन सेंसिटिव स्पीशीज व्हिच ग्रो इन लेसर पॉल्यूटेड साइट्स. सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द पॉल्यूटेड वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजर्स. इसमें केवल स्मूथ वॉल्ड राइजर्स होते हैं. एब्सेंस ऑफ स्केल्स एंड सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट्स, तो इनमें प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स स्केल्स नहीं पाए जाते, तो ये ज्यादा सेंसिटिव है कंपैरेटिवली. फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका फाउंड ओनली ऑन दोज साइट्स वेयर क्रिमेशन टेक्स प्लेस, है ना, जहां पर ये क्रिमेशन ग्राउंड्स होते हैं. एंड बेंथिक एंड मार्जिनल सॉइल्स रिच इन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, तो ये वहां ग्रो करते हैं हाइग्रोमेटिका एंड दे कैन स्टोर मोर फॉस्फोरस एंड कैल्शियम.
Then Psychometrium indicum, it is a moss which absorb the heavy metals. Bryophyte growing on the riverbanks of Ganga absorb very high level of heavy metals like chromium, zinc, and nickel. So this is Psychometrium, store chromium, zinc, and nickel. So I have shown you the pictures of these bryophytic plants. This is Rixia gangetica. This is Rixia frosti. This is Fureria hygrometrica. And this is Psychometrium indicum. Then the main advantages of using bryophytes as indicator in aquatic habitats. So what are the advantages? There is a constant uptick of pollutants from water over the entire surface. तो absorb कर लेंगे और ग्रोथ इनकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगी, तो हम वहाँ पर वाटर बॉडीज को इवन क्लीनिंग के लिए इनको यूज कर सकते हैं. मोस्ट एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स आर फेयरली टॉलरेंट अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक हेवी मेटल्स which they tend to accumulate. Then bryophytes react quickly to change in water quality according to increase or decrease in nutrients or toxic substances. Then fourth is they form stable and homogeneous population, and they show green leaves and active metabolism throughout the year, which favors them over higher plants which lie dormant during the winter season, or algae which often show restricted life spans. तो ये throughout year water bodies के आसपास grow करते रहते हैं. There is only a limited number of submerged species in the northern hemisphere, which in contrast to some enormous biomass, easily to identify in most of the cases. So the based upon their ability to accumulate pollutants or respond sensitively to changes in the water quality, bryophytes are used either as accumulation indicators, or the bryophyte species assemblage are investigated for indication of water quality, including the nutrient status or change in the pH. We can check through their absorbing and accumulating capability. Then air pollutants affect the habitat and growth forms of the bryophytes. First is sensitivity of bryophytes towards air pollution increases from terricolous to saxicolous and corticolous species. Terricolous means from bark, bryophytic plants which grow on the bark or epiphytic, to saxicolous means grow on other substratum like hard substratum, or corticolous means which can grow on the cortex area or the cortical area or the bark or epidermal area of the leaves. Totula, Princeps, Bryum rubrum, Ceratodon purpureus, and Pohela cruda are able to tolerate level of pollution on stone walls than on the tree trunks. Growth from the bryophytes in respect to tolerance of pollution gradually increases from tall turf, large cushion or leafy liverworts to smooth and small cushion, and finally most resistant are soft turf and thalloid liverworts. है ना, तो इनकी कैपेबिलिटी जो है वो इस वे में इस सीक्वेंस में रहती है. Then fertility of bryophytes decreases as pollution level increases. Bryophytes species sensitive to air pollution are Eulota crispa, they are very sensitive. Platydictia subtil, then Paraleucobryum longifolium, then Frulenia, Massicola, then Trochologunia, Sedibicens, then Lopocolia minor. These are very sensitive to pollution. I have shown you pictures over here. Eulota, Platydictia, then Paraleucobryum, then Frulenia, then Trochologunia and Lopocolia. तो ये जो है Lopocolia, ये जो है ये sensitive species हैं. They show quick response to the pollution. So this is about the references. Okay, thank you so much for listening carefully. And I think now you are prepared for your exam. Few chapters have been left. We are trying to overcome as soon as possible.
If you have any question, you may ask. I have 6 minutes to left. If you have any query, you may ask. You may unmute yourself and you may ask. No queries? No, ma'am. Okay, Rohit. ठीक है, तो फिर I am closing the meeting. And if you have any question, you may ask on the WhatsApp group, because now up to final preparation है. जो चैप्टर्स बचे हैं उनको प्रिपेयर कर लेंगे. बायो इंडिकेटर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है, but usually comes as 7.5 or 5 marks question. Bryophytes as bioindicators, bioindicators of pollution, water pollution, air pollution separately, तो short answer question form कर सकता है. Okay, जय हिंद.